Punjab to now politics in Uttar Pradesh. That is also another state gearing up to go to elections next year. It's going to be a high-stakes battle, as it always is. The country's biggest state, Uttar Pradesh. One clear trend that has already emerged months ahead of the elections, just as the campaign season is beginning for most parties as they're drawing up their strategies. One common thread is Ayodhya. Ram Janmabhoomi, Ayodhya, and the politics of it. Tonight we talk about that. And why am I picking it up tonight? Because the Aam Aadmi Party, technically the newest kid on the block that has actually got some success in the national capital, is also going to be fighting elections. And the AAP, that is looking at Punjab, looking at Gujarat, and now in Uttar Pradesh, held a Tiranga rally in Uttar Pradesh in Ayodhya. Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia and the AAP spokesperson Sanjay Singh, they led this 3-kilometer-long Tiranga Yatra in Ayodhya. And obviously the commentary with it had to do a lot about patriotism, nationalism. They actually said that fake nationalists are stunned. Energetic youth is chanting Vande Mataram. And that real nationalism means good education and health system. Real nationalism means employment and a society without criminals. Now, they can say all of this, but the fact is that they went to Ayodhya to get this message out. Just before the Aam Aadmi Party leaders visited the place, Owaisi did. Asaduddin Owaisi had held rallies in Ayodhya as well. Just before Owaisi, it was Mayawati's close aide and several other BSP leaders along with Satish Chandra who held these specific events to reach out to the Brahmin voters. All of this from Ayodhya. Is that going to be the key theme? All roads to poll victory or poll result returns go via Ayodhya this election season. Let's say good evening to the panelists who are joining me on this conversation right now. And I say good evening to Mr. Sudhindra Bhadodia of the BSP joining me right now on this conversation. Sudhir Mishra, resident editor of Navbharat Times. Alok Awasthi, spokesperson for UP BJP. Deepak Bajpai, Aam Aadmi Party leader, also joining me. In a bit, we'll also have Samajwadi Party joining us as well. But first up, let's go across to the Aam Aadmi Party and understand from Deepak Bajpai कि अयोध्या को क्यों चुना ये मैसेजिंग के लिए, इस तिरंगा यात्रा के लिए. Tanvi, let me put it in a perspective. You want me to reply in Hindi or English? Whichever you wish to, English preferably. Okay, so I'm saying let's put it in a perspective. When Arvind Kejriwal started his political journey in 2013, it was from the temple of Maharshi Balmik who actually wrote Ramayana. So there's nothing about politics. Ram Raj is a concept of good governance. Daihik, Daivik, Bhautik, Tapa, Raj nahi kehu vyapa. Nobody in Ram Raj had any health problem or money problem or any materialistic cost. So that is the good governance model which is given by Ramcharitmanas or from the Ram Raj. And that is what we aspire for. That is what we are committed to. We started in 2013. Now you see, Delhi is a model. It's a model of governance that we are taking to places like Gujarat, Punjab, Goa, Uttarakhand, and of course UP. So that is the message we want to give. If people in Delhi can get 200 units of electricity free, why can't you? And why don't you get the electricity at all? In so many areas of Uttar Pradesh. That is the question. If a person living in Delhi, can get good schools for their kids, why not people of UP? Say about healthcare structure.
We have mohalla clinics in UP, in Delhi. Why don't people in Uttar Pradesh deserve those mohalla clinics? They deserve all of that and more, Mr. Bajpai. The question is, why do you have to, why do you feel the need to label it as Ram Raj? I didn't hear that the first time Arvind Kejriwal went to elections in the national capital. The question is very simple. Why did you have to make these announcements and link it to Ram Raj while standing in Ayodhya? No. Let me tell you, our first Tiranga Yatra was in Lucknow, where I was also present. Second was in Agra. Third one was in Noida. And this is the fourth Tiranga Yatra we are holding. And as I understand, there's no ban on Aam Aadmi Party going to Ayodhya. And when Arvind Kejriwal contested an election from Kashi, Varanasi, he went and attended the prayer at Kashi Vishwanath temple and Kotwal ji's temple. So when we were in Ayodhya, of course, Manish Sisodia ji and Sanjay Singh ji went and paid their respect to Lord Ram. There's nothing unusual. It happens to one of the important towns, not only in Uttar Pradesh, but in world, because it is the birthplace of Lord Ram. So, of course, it's a revered place and we went there. But it is not at all a communal agenda. Right from the beginning, we have been saying Ram Raj actually, basically is about a good governance model that Ram projected. You will be surprised to know that the king of Thailand is called Ram. Why? Because of the good governance. You know, it's a secular country. Only the king of Thailand has to be a Buddhist. They respect this model. Thailand respects this model. So we are only concerned about the good governance which is given in, or the ideal governance model which was given by Lord Ram. What is the harm? Okay, let me take this point across to Mr. Alok Awasthi. We adhere to the Indian Constitution. But Mr. Alok Awasthi, on this point, for a change, are we going to see Aam Aadmi Party and BJP agreeing that this is not a communal pitch? This is a pitch about development, which is obviously good development for everybody under Ram Raj. 2014 से पहले कोई राम राज्य की बात भी नहीं करना चाहता था। राम को झुठलाते थे लोग, और राम के अलावा बाकी सारी बातें करते थे। लेकिन आज मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार आने के बाद से आज राम राज्य की परिकल्पना में हर आदमी आना चाहता है। आखिर जिस समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, कितनी बार राम मंदिर के लिए आवाज उठाई गई, कितनी बार आप सुप्रीम कोर्ट में जिस समय की सरकारों ने, उस समय तत्कालीन सरकारों ने एफिडेविट दे दिया था कि राम जो है काल्पनिक है और जो राम सेतु है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उस समय आपकी पार्टी या और जितनी पार्टियां थी कहाँ थी? आज तो समाजवादी पार्टी को भी कह लीजिए, कांग्रेस को भी कह लीजिए, आम आदमी पार्टी को भी कह लीजिए, मोदी जी के आने से पहले 2013 में आलोक जी, अरे वाजपेयी जी कुछ तो सभ्यता सीखिए। नहीं 2013 में अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत, आप इंटरप्ट करिए मुझे, जरूरी है, लेकिन ओके 1 मिनट प्लीज, लेट आलोक अवस्थी फिनिश हिज पॉइंट। हाँ, आलोक अवस्थी बात खत्म करिए जी। तो आज सबको पहले में कोई इतराज नहीं होता था। आज कम से कम भगवान राम के मंदिर में जाने की जा रहे हैं, अच्छी बात है। कम से कम मोदी जी और योगी जी के चलते आप आज हर आदमी जो है राम मंदिर जा रहा है, अच्छी बात है। मैं आलोक अवस्थी जी को इस बात की चुनौती देता हूं, सुनिए, मैं आलोक अवस्थी जी को इस बात की चुनौती देता हूं कि गीता के प्रथम श्लोक से अंतिम श्लोक तक मुझसे बहस कर ले, रामचरितमानस पे मुझसे बहस कर ले, अगर वो यहाँ पर झंडा लेके धर्म का घूम रहे, लेकिन वो तो यही तो बात है मिस्टर वाजपेयी। इलेक्शन के समय में ये नहीं कंपटीशन होता है कि किसको क्या मंत्र ज्यादा आता है या किसको क्या प्रेयर ज्यादा आती है। अलाउ मी टू प्लीज गो टू माय अदर पैनलिस्ट एंड आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग टू मिस्टर वाजपेयी, मिस्टर दीपक वाजपेयी, we getting your audio with a bit of a lag, so every time you try and interrupt multiple times, it's going to throw off the entire conversation, because you're getting our audio with a lag and you're responding with a lag. So okay, understood. If you raise your hand, I'll come to you. I'll give you a chance to make your point. Let me go across to Mr. Bhadoria. Mr. Bhadoria, is this the new trend that everybody has to cave into? Is what Alok Awasthi is saying? क्या यही है अब सच कि जो जिस चीज की शुरुआत उन्होंने की, अब सारी पार्टीज को वही एक ट्रिक अपनानी पड़ेगी इलेक्शन में?
देखिए, एक चीज मैं कह दूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत सारे सवालों पे हो रहा है। अयोध्या में भी मन में एक तो वहां की जमीन में खरीद का घोटाला हुआ, राम के नाम पर तमाम पैसे इकट्ठे किए गए, वो पैसे कहां खर्च हुए, कहां नहीं खर्च हुए, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते थे वो उनकी जमीन की खरीद तक में जो है घोटाला हो गया। तो तमाम तरह की बातें हैं, पर साथ ही साथ जहां तक बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न है, हम जो एक जिम्मेदार पार्टी है, 4 बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश में, और हम वहां के किसानों को, बेरोजगार नौजवानों को, महिलाओं के आत्मसम्मान को, इन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। और जुल्म और अत्याचार भी हुआ है, तमाम लोगों पे हुआ है। जैसा हमारे राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने अपनी शुरुआत की अयोध्या से, पर वो शुरुआत इस बात के लिए थी कि ये बहुत ही सेक्टेरियन ढंग से सरकार काम कर रही है और इन्होंने कुछ लोगों को एकदम अलग छांट रखा है। इसलिए हम लोगों की एक कोशिश है कि वहां पर समरसता कायम की जाए। विकास का जहां तक हम लोगों ने मॉडल दिया उत्तर प्रदेश में, बातें कोई भी लंबी लंबी हाके, पर बहन मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो वहां का विकास दर 9% था। जब मुलायम सिंह जी से उन्होंने अपनी ये कुर्सी ली तो उस समय 3.5 से 4% था, दुगने से ज्यादा करके वो छोड़ के गई 2012 के अंदर। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसानों की आमदनी को तो ये दुगना करने की बात करते थे, हम लोगों ने ये करके दिखाया कि गन्ना की कीमत जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी 125 रुपया क्विंटल थी, 125 रुपया। जब वो छोड़ के गई कुर्सी तो गन्ने के दाम 250 रुपया किया गया। इनके दसियों हजार करोड़ रुपए गन्ना किसान का बकाया है। बहन मायावती जी ने कहा था कि हम अपने शासन में 1 सप्ताह से ज्यादा का समय नहीं देंगे गन्ना किसानों के भुगतान के लिए, और अगर भुगतान नहीं होता है तो मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको FIR करने का भी निर्देश दिया गया था। तो किसान भी खुश था, बेरोजगारी क्योंकि आर्थिक विकास हुआ था वो लोग भी खुश थे। और विकास के हम लोगों ने, आप यमुना एक्सप्रेस वे पे जाके आगरा तक देखिए, विश्व स्तर का एक एक्सप्रेस वे बनाया। बहन मायावती जी ने दर्जनों विश्वविद्यालय बनाए, तो ये सब बात करने के लिए मिस्टर भदौरिया, every party will either have a report card to give or promises to make. My limited question is कि why does it get linked to reaching out to people in the name of Ram Rajya, in the name of the Brahmin Sammelans that you were doing in Ayodhya? Why does it get reduced to these identity politics? No, let me say one liner, that our firm commitment to Constitution of India, we are going to work in order to preserve the Constitution and bring about social change, and also at the same time will fulfill the dreams of the farmers and the dreams which were cherished by Baba Saheb Bhimrao Ambedkar for a egalitarian social order, and we shall work towards it. Okay, let me now bring in an experienced voice, Mr. Sudhir Mishra, on this conversation. Mr. Sudhir Mishra, ye election mein is the agenda development along with some religious politics, or is it religious politics in the garb of development politics? कि ये लड़ाई प्रतीकों और बिंबों की है। प्रतीक और बिंब बहुत मायने रखते हैं राजनीति में, चुनाव में। पिछले अगर आप 10 साल में देखिए तो अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता आलोक जी की बात से थोड़ा सा सहमत भी हूँ कि उन्होंने जो कहा ना कि मोदी जी की सरकार आने के बाद में 10 साल से उनकी सरकार है और उन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया अपने पाले में लाकर लोगों को लड़ने के लिए। वो अपने पाले में खींच के ला रहे हैं। आप चाहे राहुल गांधी जी को देखिए, वो मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ दिखाते हैं। उसके बाद आप
और नेताओं को देखिए, कुंभ में लोग नहाते हैं, सारे प्रतीक वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व से जुड़े हुए। एक चीज तो, एक एजेंडा तो बीजेपी ने सेट कर दिया है कि आपको अब बहुसंख्यक की बात करनी होगी, और ये बात राजनीतिक दल सारे समझ चुके हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो समझ चुके हैं। और यही उसका ही नतीजा है कि जब उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, छुट्टा जानवरों के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के हैं, स्कूलों के हैं, बच्चों के हैं, इस समय बहुत नौकरियों का, जॉब का इश्यूज हैं। आप अयोध्या में जा जाके आप अपनी राजनीतिक रैलियां निकाल रहे हो और अपनी राजनीतिक शुरुआत, चुनावों की शुरुआत कर रहे हो। इसका सीधा से यह मतलब है कि आप बीजेपी के बताए एजेंडे पे चल रहे हो। बीजेपी ने जो नैरेटिव सेट किया है, आप उसी में काम कर रहे हो, उसी के हिसाब से चल रहे हो। ये लड़ाई बीजेपी अपने मुताबिक चला रही है। जो राजनीतिक चुनाव, जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, वो उसके हिसाब से चल रही है। वरना यही इश्यूज, अगर तिरंगा रैली की बात है, आप वहां पे जाते हैं, डिप्टी सीएम जाते हैं और लोग जाते हैं, क्या इसका मतलब है? आप यही मैसेज देना चाह रहे हैं ना कि हम भी राम के भक्त हैं। तो सुधीर मिश्रा जी, जो आप ये बात बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है, मैं भी इसको इसी नजरिए से देखती हूँ। लेकिन मेरा सवाल फिर ये है कि बीजेपी के नैरेटिव से जो चल रहे हैं वो क्या सोच के चल रहे हैं कि कैसे इसमें वो उनको उत्तर प्रदेश में कैसे उस चीज से जीत पाएंगे? राम मंदिर तो बीजेपी ही बना के देगी एट द एंड ऑफ इट। वही मैं भी वही नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर वो हिंदुत्व के लाइन पे जा रहे हैं, अपने सॉफ्ट हिंदुत्व पे, तो जो हार्ड लाइनर्स हैं उनसे कैसे जीत पाएंगे आप? मैं भी ये बात मुझे भी नहीं समझ में आ रही। Let me ask Mr. Bajpayee that question. Mr. Bajpayee, you can talk all you want about development, but when you start to overtly show your religious beliefs, when you start to overtly show how many mantras you know and how many prayers you know and how many festivals you follow and how many Indian religious Hindu customs you follow, and when you start off your campaign with Tiranga rallies and use all the keywords from Ayodhya to Ram Raj to Tiranga to patriotism and nationalism, how do you think you're going to beat the king of this kind of narrative? जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और सुधीर जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उनके लिए इसका जवाब मैं देना चाहता हूं। दरअसल सुधीर जी, ये भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैप है कि राम की बात मत करना, हिंदू की बात ना करना, ये हमारी टेरिटरी है, इसके अंदर घुसना मत। इस ट्रैप में आम आदमी पार्टी पैर नहीं रखेगी और उनको बताना चाहेगी कि 1930 में नरेंद्र मोदी जी पैदा नहीं हुए थे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि तब हरिजन में गांधी जी ने लेख लिखा था 20 मार्च 1930 का। उसमें हरिजन के अंक में उन्होंने कहा कि राम राज्य से मेरा तात्पर्य यह है, और जब आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो मेरे पास सबसे सही अर्थ अगर उसका कोई दिखता है तो राम राज्य दिखता है। गांधी जी ने उस वक्त महान कम्युनिज्म फैला रही हिंदू महासभा को उन्हीं के प्रतीकों से और सही अर्थ से, सही भावार्थ से उसको पटका था। और यही वजह थी कि हिंदू हार्डलाइनर्स को अंत में गोडसे के जरिए गांधी की हत्या करते ही बनी, कोई रास्ता नहीं बचा। गांधी ने कहा चरखा राम राम से भरा हुआ, क्या वो कम्युनल थे? गांधी ने कहा मेरा मानना है कि अगर गुड गवर्नेंस है तो केवल राम राज्य मेरे अर्थ में, इससे नजदीक कोई अर्थ नहीं होता, तो वो क्या कम्युनल थे? उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स को सर के बल उठा के पटक दिया। अगर आप भारतीय स्वतंत्रता का अगर आप इतिहास पढ़ना चाहेंगे तो एक वक्त ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू राष्ट्रवाद की दिशा ले चुका था पूरा। मैं उन नेताओं के नाम लेना चाहता। और हालत ये आ गई कि 1937 में जब इस देश के पहले चुनाव हुए तो आप अलग कैसे होने वाले हैं? How are you going to be different, Mr. Bajpayee? अंग्रेजों ने हमको How are you going to be different, Mr. Bajpayee? You're using the same keywords. I am making a very important point. Allow me to make that point. Okay. No, I am saying that Gandhi trounced these communal elements only using this. He said, I will not be scared away. And you will be surprised to know, Tanvi, that in 1939, when Congress had to resign from 8 governments after Britishers refused a constitutional scheme, you know what? Hindu Mahasabha had to align with Muslim League to form governments in 3 states, NWFP, West Bengal and Sindh. And Pakistan's resolution was passed in Sindh Assembly when Hindu Mahasabha was in power. They were exposed. So they can't scare us away. They are not the flag bearers of Hindus. Okay. That is the only way you can defeat them. Okay. आप इनके ट्रैप में पड़ेंगे कि नहीं हम हिंदू से दूर रहेंगे, हम बात नहीं करेंगे. That means you are giving them. I also say good evening to Ghanshyam Tiwari, but को एक आप walk off दे देंगे कि जाइए.
Let me also get a quick response from Alok Awasthi and then I'll go across to Ghanshyam. Yes. देखिए तन्वी जी, वाजपेयी जी कहना क्या चाहते हैं, ये लगता है कि डिरेल होकर के कहीं ट्रैक से भटक गए, 1937 तक पहुंच गए हैं। कोई बात नहीं, अभी आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में आने से। हाँ, आपने ये बात आप प्रयास कर रहे हैं कि अब आप राम राज्य की बात तक आ गए हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। चलिए, आप कम से कम राम को मानने तो लगे हैं। अभी तक तो राम से लोग दूरी बना के बैठे हुए थे, उसमें आपकी पार्टी भी शामिल थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भदौरिया जी अभी कुछ कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट और सारी चीजों के बारे में और गन्ना किसानों के बारे में बात कर रहे थे। मैं भदौरिया जी को याद दिलाना चाहता हूं कि गन्ना उत्पादक सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और आपके राज में मायावती जी ने 19 चीनी मिलें बंद कर दी थी, और जितना भ्रष्टाचार और वो हुआ था उसकी वजह से आप एक भी इलेक्शन जीत नहीं पा रहे हैं। आप इसके पहले 2012 में विधानसभा चुनाव आप हारे बुरी तरीके से, 2017 की विधानसभा में बुरी तरह से आप हारे, 2014 में आपका खाता नहीं खुल पाया लोकसभा का, 2019 में आप जो है अखिलेश यादव के साथ बैसाखी में लग करके भले ही आप कुछ सीटें पा गए, लेकिन आपका कहीं अस्तित्व तो नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि घनघोर जातिवाद और जिन ब्राह्मणों को प्रबुद्ध वर्ग की आज आप बात कर रहे हैं उनके ऊपर हरिजन एक्ट के मुकदमे सबसे ज्यादा समाजवादी आपकी बहुजन समाज पार्टी सरकार में लगाए गए थे। तो भदौरिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2016 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो बजट आया था वो 2,16,000 करोड़ रुपए का आया था, और आज 2021 का जो बजट आया है वो 5,54,000 करोड़ रुपए का बजट आया है। इतना बड़ा डिफरेंस है। पिछले 5 साल के जो जीडीपी थी समाजवादी पार्टी की वो 10 लाख करोड़ के आसपास थी, और आज वही जीडीपी बढ़कर के 22 लाख करोड़ तक पहुंची है। साफ साफ दिखता है, एक बड़ी लकीर खींची है योगी आदित्यनाथ जी ने कि हमने गुंडागर्दी को जड़ से खत्म किया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का आना शुरू हुआ है। 3.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने की वजह से हम 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न करने की पोजीशन में आए हैं। आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश का भरोसा क्यों बढ़ा है? पहले देश में आजादी के पहले मात्र 12 मेडिकल कॉलेज होते थे, 35 मेडिकल कॉलेज योगी आदित्यनाथ जी ने बनाए हैं। एक एम्स जो है गोरखपुर में बना है। जी, आपने आजादी के पहले से कंपेयर कर दिया आलोक अवस्थी कि एसेंशियली राइटिंग ऑफ एवरीथिंग दैट may or may not have been done since the independence up till Yogi ji came into the state. I say good evening to Sangeet Kumar Ragi as well, but let's me first go across to Ghanshyam Tiwari, because Ghanshyam Tiwari, the challenge here is going to be very different. And while your party claims that you already announced a series of Ayodhya related development projects, the other parties have taken the lead this time. All roads to UP elections go via Ayodhya. Where is Akhilesh visiting? Good evening, Tanvi, to you, my co-panelists and your viewers. I will say 3 things. One, it is like every day, it's a sad day in Uttar Pradesh. Children are losing their lives. Their parents are going from place to place, not getting any support from the healthcare infrastructure of the state. And the Prime Minister, who was just barely few kilometers away from that place, did not utter a word. Hundreds of children are dying. Not a word from the Chief Minister, not a word from the Prime Minister. I would say, I'll respond to Adityanath in his own coin. बच्चे जान गंवा रहे हैं, यमराज के दूत उत्सव मना रहे हैं, रोते बिलखते माँ बाप दर दर जा रहे हैं, भाजपा के नेता ढोल बजा रहे हैं, सावधान रहिए, मौत के सौदागर उत्तर प्रदेश में छा रहे हैं. A party that has only delivered, this is their 2017 manifesto. They mentioned 70 lakh jobs in 5 years. Just now, the BJP spokesperson was saying 2 crore jobs. In another debate, another spokesperson was saying 6 lakhs jobs. The chief minister puts posters of 4 lakhs jobs. They don't have a single word to answer to their own promises. Just tell me a page number, I will open it, and not a one promise has been delivered. To the daughters, they promised. Today is the 1-year anniversary of the crime committed by this, heinous crime committed by this government, this administration in Hathras. They promised that every girl, by the time she turns 21, she will be given 2 lakh rupees. They promised that every child who goes to college will be given a laptop. Not a single promise has been fulfilled. So they resort to what they are known for, the Hindu-Muslim hatred politics. If you look at the ADR report of 2017, 20, which is 45% of their cabinet ministers, have criminal charges based on their own affidavit. What kind of criminal charges? Attempt to murder. There are at least 4 cabinet ministers where the charges are on religious animosity. That includes the chief minister, the deputy chief minister, 2 other ministers. This is their core capability. We are not going to fall for it.
We are absolutely certain that this election is about routing a party that turned Uttar Pradesh into the story of Shamshan Kabristan after So I just want to know one thing from you, Ghanshyam, and again I will reiterate what I said earlier on this debate before you joined us, that each party can either go present us their report card or their promises, a list of promises for what happens next. So are you telling me that Akhilesh Yadav will choose to go to Firozabad rather than to Ayodhya tomorrow? I am telling you that there is only one agenda in Uttar Pradesh, the agenda of basic prosperity. Forget the Achhe Din. BJP has shown Bure Din to every family in Uttar Pradesh. What is the answer to Firozabad? Recently they said they'll change the name of Firozabad to some Chandnagar, Chandranagar, they will tell. And that is the answer to Firozabad. So Akhilesh Yadav ji has promised one thing, that when we go for campaign, when we go to people, when we seek votes, the agenda will be our past work, the agenda will be employment, the agenda will be bringing Uttar Pradesh to basic infrastructure fulfillment, the agenda will be harmony. You cannot have a chief minister who's saying Abba Jan, a chief minister who, if you ask the BJP spokesperson who's the Abba Jan of Adityanath, he will not have an answer. So a chief minister who doesn't have an agenda to offer to the state is going to bring this kind of toxic and rotten politics. Okay. Quick comment from Alok Avasthi and then I go to Sangeet Kumar Ragi. Yes. तन्वी जी, इनको अब्बा जान से क्यों इतनी नफरत हो रही है? वोट लेने के लिए तो गोल टोपी पहन लेते हैं और अब्बा जान तो एक सम्मानजनक शब्द है, इसके लिए समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है, तो मुझे हैरानी हो रही है, क्योंकि अब ये भी राम मंदिर में जाना चाहते हैं। जिन्होंने अयोध्या में गोली चलवा के कारसेवकों को मरवा दिया था, जिन्होंने अपनी सत्ता में रहते हुए बनारस के अंदर साधुओं को पिटवाया था, जिन्होंने अयोध्या के अंदर पंचकोशी परिक्रमा में रोक लगा दी गई थी, जो कि कभी नहीं रोकी गई थी, वो आज वो भी जो है रामराज की बात कर रहे हैं। ये है मोदी और योगी का मॉडल, जो कि आज सारे लोगों को इस ट्रैक पे आना पड़ा है। जो घनघोर राम के विरोधी थे, जिन्होंने राम भक्तों को हत्यारे थे, उनको भी आज आना पड़ गया है। और आप जो घनश्याम तिवारी जी जो बात आप कर रहे हैं, आप 5 साल सरकार अखिलेश यादव के चलाने के बाद आपने अगर इतने अच्छे काम किए थे, तो क्या कारण था कि आपको कांग्रेस की बैसाखी लेके चुनाव लड़ना पड़ गया? यानी कि 5 साल आपने काम करने के बाद भी आपको ये भरोसा नहीं था अखिलेश यादव के ऊपर कि वो जीत पाएंगे। और अच्छा हुआ कि आप कांग्रेस के साथ लड़े, कांग्रेस को भी डुबोया, खुद भी आप डूब गए। तो आपका वही नतीजा अभी तक आ रहा है कि आप बराबर दोनों लोकसभा हार चुके हैं, आप विधानसभा के उपचुनाव में सारे हार चुके हैं, नगर निगमों के चुनाव में आपका खाता नहीं खुला हुआ है, और आप मान के चलिए कि आप जनता में है कहां? पिछले 1.5 साल से तो आप क्वारंटाइन होकर घर के अंदर समाजवादी पार्टी बैठी हुई है। अपराधियों की पौबारती, आपके रोल मॉडल अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी आज जेल के अंदर हैं, और जितने रोल मॉडल आपके थे हथियार जो जिनका अपराधियों का उपयोग करते थे, उनको हमने ठोक करके उन बदमाशों को जिन्होंने जनता का दूबर कर रखा था, वो आज सब पता नहीं कहां चले गए हैं, बाकी जेल के अंदर है। तो आप किस मुद्दे पर चुनाव में लड़ने जाएंगे ना, स्पष्ट कर दीजिए। ओके, तो किस मुद्दे पे? तो उसका जवाब तो अखिलेश यादव दे ही चुके हैं दिन में कि डेटा ले आइए, और डेटे पे बात करते हैं कि कितने टॉप 10 माफिया कहाँ है, जेल के अंदर है या बाहर है, और क्राइम ऊपर गया नीचे गया। एंड इफ द टू पार्टीज आर रेडी, आई वुड लव टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन. इफ द टू पार्टी लीडर्स आर रेडी, आई वुड लव टू हैव दैट एज द एक्चुअल डिबेट. बट मिस्टर संगीत कुमार रागी, अनफॉर्चुनेटली द कॉन्वर्सेशन when it comes to Uttar Pradesh elections is not really going to be about that. Let's be realistic. My question to you is, when it comes to using the Ayodhya card, why will any party believe that they can actually play the BJP's game and beat the BJP at it? I think that those who believe in copying, they always fail. I think that this is the turf on which they will not be able to defend the BJP. Ghanshyam is a good speaker, but he always intends to defend indefensible. I would like to remind him that in November 2013, it was the Supreme Court which had to intervene and say that you please withdraw the notification which you have made out to dole out 5 lakhs rupees to the Muslim victims. There were also victims within the Hindu communities also. But another thing, you must have heard, you must remember Ghanshyam, Samajwadi Pension Yojana. The Samajwadi Pension Yojana was talking about fixing a quota for the Muslims. I don't know whether it is a Hindu card or it is a Muslim card. Let the people of this country judge that whether you were involved in polarization or not. When you had to polarize the Muslim votes in favor of Samajwadi Party, your Chief Minister Mulayam Singh Yadav said
that not only 14, just 14, even another 42 would have been killed, car sevaks, I would have killed them. Why? It was, this kind of a provocative language. Why? Because he wanted to become that time Mullah Mulayam, and that becomes a popular aphorism in the politics of Uttar Pradesh, because he at any cost wanted to polarize the Muslim votes in Samajwadi Party favor. My factor, everybody knows that the Muslim and Yadav factor, let us understand this. The politics now has forced you to talk about the Brahmins, because the last time when you were in power, it was not socialism of Lohia, it was not the socialism of Jayaprakash, it was socialism of I would be calling it a Yadavi Samajwad. Out of 12 police stations in a district, if all 12 of them or 11 of them invariably belong from a Yadav community, I must say that this is not socialism. You were talking about the representation. What is this representation, Ghanshyam? That chacha bhi sansad, chacha ki chachi bhi sansad, patni bhi sansad, swayam bhi sansad, pita bhi sansad. What kind of dynasty politics you are talking about? I'm not talking about कि घनश्याम आप कहेंगे कि एक परिवार में होता है, but this is a dynasty politics is entirely different from what the politics, Rajnath Singh have or any other politicians have. Here, a family is controlling the political party and deciding the fate of everyone. Okay, who will be out. एक समय में रागी जी 35 लोग इनके परिवार के जो थे, what? It is not anybody else. It is the family which is decided. Okay. So unfortunately, Mr. Ragi, I am completely out of time. So I will have to promise you that we can get you the answers to these questions on another conversation, and I'll get you and Ghanshyam back along with everybody else. Big thank you to all of the panelists who've joined me on this conversation. Suffice to say that we are headed towards another extremely fiery UP election season. What remains to be seen is if this strategy of Arvind Kejriwal to also position himself on similar lines as the BJP's narrative, to position himself as the one who brings in Ram Rajya, as the one who attends Ganpati festivals and does the puja, as the one who announces free travel to the devotees from Delhi to Ayodhya, as the one who's seemingly a lot more right-wing in his beliefs, openly a lot more Hindu in his beliefs, and still comes in with the welfare schemes. Is that a strategy that can actually get anywhere in Uttar Pradesh? Or will BJP still continue to win in a territory that it has created, it has designed and led for the longest time? What remains to be seen is other parties like BSP also trying to ape a similar model. Will it work or just further reduce them to irrelevance? We wait and watch. This is just the beginning of the campaign season in Uttar Pradesh. Stay with it.